लगातार बना हुआ। और एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों का अल्टीमेटम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रूस तुरंत बंद करे अपने हमले, मैक्रों की चेतावनी है रूस को। सीधे तौर पर पुतिन ने कहा कि बीच में आने वालों का अंजाम बुरा होगा। पुतिन पहले ही धमका चुके हैं तमाम देशों को। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का कबूलनामा, ये बड़ी खबर। लुहांस्क पर रूसी सेना का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है और मिलोव तालिबा का इन पर कब्जा हो चुका है। लगातार आगे बढ़ रहे हैं रूस का इन पर कब्जा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का यह कबूलनामा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि जिसको अलग किया उन्होंने, जिसको यूक्रेन का जो लुहांस्क, उस पर पूरी तरीके से रूस ने कब्जा कर लिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और रूसी हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, CNN के हवाले से बहुत बड़ी खबर। दूसरी तरफ यूक्रेन का कबूलनामा, उन्होंने कहा कि इन इलाकों पर क्रसाना भी इसमें शामिल है, तालिबा का भी शामिल है, इस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का यह कबूलनामा, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार रशिया जो है यूक्रेन में आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार कब्जा कर रहा है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जो यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन के हवाले से क्या कहा जा रहा है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने वो इलाके बताए हैं, वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिस पर रूस की सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ वो तस्वीरें जहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, वो टैंक, वो तोप, वो मिसाइलें लेकर रूस की सेना जो है तीनों तरफ से घुसी है। रूस से घुसी है, क्रीमिया से घुसी है और बेलारूस से घुसी है। ऊपर से वो पैराट्रूप्स की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। तो पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में जो हमले, दुनिया में जो हलचल मचाई है इस हमले ने, जिस तरीके से रूस आगे बढ़ा है और जिस तरीके से उसने पूरी तरीके से यूक्रेन को घेरा है, उसके कई शहरों पर अब तक कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी खबर, रूसी हमले में यूक्रेन के 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। CNN के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। रूस यूक्रेन बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। CNN के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, यहां पर पुतिन के उस बयान पर सवाल उठ रहे हैं जहां पर पुतिन ने कहा था कि हमारा मकसद आम नागरिकों को निशाना बनाना नहीं है और जो यूक्रेन के हवाई अड्डे हैं जहां पर फोर्सेस तैनात है, वहां पर हमारा टारगेट है। हम उन पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक और बड़ी खबर, शाम 4:30 बजे नेटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यूक्रेन संकट पर ही संजीव त्रिवेदी सुबह से लगातार बने हुए हैं। संजीव, यूक्रेन संकट पर एक के बाद एक बड़ी खबर। 100 से फ्रांस एक्टिव हो गया है, रूस को धमकाया जा रहा है नेटो की 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाब देने के लिए। सवाल उठ रहे हैं नेटो पर कि आखिरकार जब रूस की सेनाएं पूरे यूक्रेन में घुस गई हैं तो अभी तक नेटो जो कि लगातार ये कह रहा था कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेन के अधिकारों के लिए खड़ा है, तो वो कहां है। ये जानकारी मिली है कि जेन्स स्टोल्टनबर्ग जो कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बैठक कर रहे हैं और इस वक्त वो मुलाकातें कर रहे हैं नेटो के जो महत्वपूर्ण देश है उनके साथ। और ब्रसल्स में आप जानती हैं वहाँ पर हेडक्वार्टर्स है नेटो का, बेल्जियम में, वहाँ ये बैठक चल रही है। 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जो कि सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, वो रिएक्शन क्या होने जा रहा है नेटो का इस बारे में बताएंगे। उसके पहले उनकी मुलाकात होनी है यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल से। और यूरोपियन यूनियन जो कि समझिए बगल में पड़ता है पूरे देश, जो पश्चिमी देश EU के अपनी प्रतिक्रिया उनके साथ जोड़ेगा। तो यानी कि पश्चिम के देश भी तैयारी कर रहे हैं और ऐसा और जवाब दिया जाएगा ये। और ऐसा लगता है कि उसे इन्वोक किया जा सकता है कि यूक्रेन चूंकि सदस्य देश नहीं है इसीलिए नेटो एक्शन नहीं ले सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नेटो के 30 सदस्य देश हैं, 30 कंट्रीज, और अगर इन 30 देशों में से किसी भी देश को ये लगता है कि उसकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है तो फिर वो नेटो को एक्शन लेने के लिए कह सकता है। इस केस में हम ये देख रहे हैं, इस मामले में हम ये देख रहे हैं कि बगल में पोलैंड है, पोलैंड जो सबसे करीब देश है, और उसके अलावा बाल्टिक गणराज्य, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तमाम ऐसे देश हैं जो कि नेटो के सदस्य देश हैं जो रूस के इस अग्रेशन से कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में एक व्यवस्था की गई है नेटो के चार्टर में, आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 जो ये कहता है कि अगर कोई भी नेटो सदस्य देश खतरा महसूस करता है तो फिर नेटो एक्शन में आएगा और शायद इसी को इन्वोक किया जाएगा। 4:30 बजे का इंतजार करना है और देख
विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यूक्रेन संकट पर, क्योंकि तकरीबन यूक्रेन के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। खार्किव की विधानसभा पर रूसी झंडा फहराया गया। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खार्किव के महत्वपूर्ण जगहों पर रूस फौज ने अपना झंडा तैनात कर दिया है। देखिए तस्वीर, बड़ी खबर यूक्रेन से, यूक्रेन रूस के बीच ये बड़ी खबर आई है और ये झंडा आपको दिखाई दे रहा है। ये है खार्किव शहर, जहां पर मिलिट्री फोर्सेस बड़ी संख्या में तैनात हैं। यहां पर यूक्रेन का ये हब है, यहां पर ताकत है यूक्रेन की। इसी पर सबसे पहले कब्जा करने की रूस की कोशिश थी और यहां पर यूक्रेन में जाकर घुसकर खार्किव में रूसी ने अपना झंडा फहरा दिया है। खार्किव के महत्वपूर्ण जगहों पर अब रूस का जो झंडा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये देखिए, ये रूस की ही सेना है जो स्टेयर्स लगाकर, सीढ़ियां लगाकर चढ़ी और इस बिल्डिंग पर अपना झंडा फहरा दिया है। यूक्रेन कितने बड़े संकट में है ये इस वक्त आप देख सकते हैं। 4:30 बजे नेटो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे करने जा रहा है। Inside the territory of Ukraine, we are getting the first information about casualties among our soldiers and among civilian population. The statement of the Russian Ministry of Defense was very cynical. We are attacking only military sites and military installations. But we have faced civilian casualties even on the outskirts of the capital. There is fighting in some areas. According to the information of our Ministry of Defense, Ukrainian side shot down 5 Russian fighter planes, 2 helicopters. We destroyed 2 tanks and several trucks. Information is continuing to come. In spite of these assurances of the military, of the strikes on the military sites, there are reports that Russian troops are crossing the border. I have special case. The relatives of my wife live just 15 kilometers from the Russian border. Early in the morning, they were waken up by some explosions on the territory of Ukraine. In the border area, Russia attacked a lot of Ukrainian checkposts and border posts. Ukraine already is introducing the military state. We are starting mobilization of the reservists. Ukrainian army is not the army of 2014, when it was very much feeble, disorganized. After 8 years, situation drastically and cardinally changed. Ukrainian people are not panicking. We are ready to defend our territory, territorial integrity, to defend our towns and cities. And this information on the first casualties among invading troops is confirmation of this fact. This aggression, it was not predicted by anyone. Sober-minded people could not expect it. Up to the last moment, the world was hoping for the peaceful solution. Up to the last moment,
our president was repeatedly asking for bilateral negotiations with Russia. No response. Now we can see the clash of democratic country, Ukraine is like India, democratic country, and totalitarian regime. Now I am ambassador to India. Of course, the position and the task of every ambassador is to make the position of the country of his stay more favorable to our case. The special case is India. You know that India is United Nations Security Council non-permanent member. India is very influential global player. I am dealing with India from my young student years, and I know a lot about the history of your diplomacy. You had such bright guys like Chanakya, or otherwise he is called Kautilya, approximately 2,400 years back, when on the major part of Europe there was no civilization, and even those days you had qualified diplomacy. Let's go into your mythological stories. Just remember Mahabharata, which according to some reports the war happened in 3102nd year before Christ. Even before Mahabharata war, there were active attempts of solving this conflict by peaceful means. Unfortunately, in Mahabharata case, it was not so successful, but I am hoping that in our case, it should be much more successful. Don't forget that India, for many years, was and still the leader of non-alignment movement. Non-alignment movement was created in the time of the Cold War just to prevent world tensions. It was based on the principles of peace. Don't forget that India was among architects of the world famous 5 principles, Panchashila. That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. It's the moment of truth
moment of destiny. I am following all the reports on the site of your ministry, and the latest advisory to your citizens in Ukraine was just not to go out, not to go to Kiev, and recommendations and the statement of your Ministry of External Affairs was that India is closely following development of events. We are deeply dissatisfied with this position. What does it mean, closely following or more closely? Now 10-15 people are killed. When hundreds or thousands will be killed, in this case, what will happen? Is following more closely. We are waiting, we are asking, we are pleading for the strong voice of India. In this case, I think that in this case, your Prime Minister can address Mr. Putin, he can address our President. Many times in the history, India played peacekeeping role. You are among the first nations from the point of view of amount of peacekeepers, even of military casualties during peacekeeping operations. That's why peace-loving nation of India, we are asking for your strong voice to stop this war. I don't know what will happen in 1 hour, in 2 hours, after 1 day. Situation may get out of control. तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब यूक्रेन को भारत से मदद की दरकार है, मदद मांग रहा है यूक्रेन भारत से कि बात करे रशिया से भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी। भारत एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।